गुजरात सहित समग्र अरवली जिल्ला में भव्य तिरंगा यात्राનું आयोजन कराયું હતું, જેમાં બિલોડા, મેઘરજ, ધનસુરા, માલપુર તેમજ મોડાસા ખાતે ભવ્ય तिरंगा यात्रा યોજાઈ હતી, જેમાં મોડાસામાં જિલ્લા કલેક્ટર, ડીડીઓ, નગરપાલિકા પ્રમુખ તેમજ અન્ન અને પુરવઠા મંત્રી ભીખુસિંહ પરમાર સહિત લોકો જોડાયા હતા। જોતા રહો અજય એ ભાટિયા સાથે ભાટિયા 15 ન્યૂઝ અરવલ્લી મોડાસા। समस्त नागरिकों को जय हिंद। आज मंत्री श्री अन्न नागरिक पुरवठा की अध्यक्षता में और खूब उत्साही पब्लिक के बीच में हमने हर घर तिरंगा यात्रा यहाँ से निकाली है, जो कि मेघरज रोड पर उमिया माता मंदिर से लेकर मला गांधी कॉलेज के कैंपस तक सभी लोग खूब उत्साह, गाजे बाजे के साथ में और देशभक्ति से ओतप्रोत वातावरण में सभी लोग सराबोर आज यहाँ तक आए हैं। मेरा सभी नागरिकों को यही संदेश है कि आप लोग हर अरवली के एक एक घर में हमारी आन बान शान तिरंगा शान के साथ में लहराए और आप लोग भी देशभक्ति के रंग में ओतप्रोत होकर देशभक्ति के हमारे जो शहीद हुए हैं, हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर में जो जवान लड़े हैं और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की याद में आप सब भी इस अभियान में जुड़े। साथ साथ भारत सरकार ने इस समय स्वच्छता पर, हर घर तिरंगा के साथ में स्वच्छता अभियान पर भी जोर दिया है। तो मेरी आप सबसे अपील है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री का जो हृदय स्वरूप उनका जो अभियान है स्वच्छ भारत अभियान, उसमें भी इसके साथ साथ देशभक्ति के साथ साथ स्वच्छता का भी रंग हम लोग ओढ़ लें। जय हिंद, जय भारत। 15મી ઓગસ્ટ રાષ્ટ્રીય પર્વ ની સમગ્ર ગુજરાતની જનતાને હું શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું। આજે મોડાસા ખાતે તિરંગાની યાત્રા કાઢવામાં આવી। તિરંગો એ આપણી આન બાનની શાન છે। આમ તો દેશની સરકારે, ગુજરાતની સરકારે નારો આપ્યો છે કે હર ઘર તિરંગા, હર ઘર સ્વચ્છતા, ને એના અનુસંધાનમાં આ બધા કાર્યક્રમો આજે થઈ રહ્યા છે। સમગ્ર રાજ્યની અંદર, સમગ્ર દેશની અંદર પણ આજે આવા તિરંગાના કાર્યક્રમો થઈ રહ્યા છે। ફરીથી હું ગુજરાતની જનતાને, આ દેશની જનતાને આ પર્વની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું।